Hello students, Jai Swaminarayan. I will take your subject remote sensing and GIS. Okay, today's topic is geographic information system. Okay, introduction. GIS is a combination of maps of geographic areas and information of every kind, that is technical, administrative, social, political, for each and every features of the earth surface. Then next, before invention of the computers, we had maps. Maps were only useful for the technical information like the horizontal and vertical distances of the features. Okay, but with the invention of the computers, it is possible to create the maps which can provide every kind of information of every features in the map. That combined system of maps and information is called the geographic information system. Geography, that means the system of maps. That means हम पहले क्या फाइंड आउट कर सकते थे मैप पे से एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट. ओके, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते थे. बस उसपे से हमें दूसरा कुछ मिलता नहीं था. ओके, कोई भी दूसरी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें नहीं मिलती थी. तो क्या इन्वेंट हुआ? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस. ओके, उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई भी एरिया है तो उसका जियोग्राफी और इंफॉर्मेशन, कोई भी एरिया रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें ये सॉफ्टवेयर पे से मिल जाती है. ओके, दैट इज कॉल्ड जीआईएस. Next, geographic. What do you understand by geographic? The location of the items of or earth surface features by independent coordinates, that is latitude, that means x coordinate, then longitude and elevation, x, y, z coordinates. Then information, useful information in forms of tables, graphs, images, maps or on screen interactive responses to the queries. इंफॉर्मेशन हमें कोई भी चाहिए. फॉर एग्जांपल हमें हम एक एग्जांपल लेते हैं. जो भी हम जीपीएस यूज़ करते हैं और गूगल मैप का यूज़ करके आप एरिया डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हो, तो आप पूछते हो कि दिस जो भी प्लेस है उस ये प्लेस से इस प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना. तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाता है, उसका आंसर आपको मिलता है. ओके, तो दैट इज वन टाइप ऑफ जीआईएस, दैट मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कोई भी हमें चाहिए, हम हमारा जस्ट टाइप हम कोई भी प्लेस टाइप करेंगे कि दिस प्लेस टू दिस प्लेस, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक क्लिक पे से हमें जस्ट माउस का क्लिक करने से हमें पता चल जाता है कि कौन सा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. देन सिस्टम, सॉफ्टवेयर हैविंग इंटरलिंक components with different functional capabilities for the data input, edit, combination, query, analysis और output. सिस्टम यानी क्या कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इतना डेटा निकालते हैं. फॉर एग्जांपल हम टोटल स्टेशन की बात करें तो टोटल स्टेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी सर्वे करते हैं तो उसमें हमें 3 एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो भी हम करते हैं उसमें जो भी सर्वे करते हैं उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मिलता है. ओके, वो हम किस में डालते हैं? जो भी इसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो स्टोर होता है. उसमें से हमें किस में लेना पड़ता है? कंप्यूटर में लेना पड़ता है. ओके, कंप्यूटर में वो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, उसको वो टेबल फॉर्म में आता है. ओके, तो कई बार ग्राफिक्स फॉर्म में, कई सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स फॉर्म में भी मिलता है, कई सॉफ्टवेयर में इमेजेस के फॉर्म में भी मिलता है, कई सॉफ्टवेयर में मैप के फॉर्म में भी मिलता है. ओके, तो इसमें क्या है, जो भी हम इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं और उसके हिसाब से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मिलता है. फॉर एग्जांपल ये डेटा लेके हमें कंटूर सर्वे जो भी किया है कि टोटल स्टेशन का यूज़ करके हमने जो भी सर्वे किया है तो उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मैप फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टली.
ओके। तो फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम में हम डेटा डाल देंगे और उसका आंसर, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की बात कीजिए, तो कंप्यूटर में आपने जो भी डेटा डाला हो, कंट्रोल F आप दबाते हो और उससे हमें क्या पता चलता है, जो भी हमें क्वेरी हो, फॉर एग्जांपल ये फाइल हमारे पास है कि नहीं है वो जानना है, तो हमें वो मिल जाता है। उसी तरह से GIS सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम जो भी डेटा अंदर डालते हैं उसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है, तो हमें उसका आंसर उस पे से मिल जाता है। ओके। ईच पॉइंट ऑफ मैप्स ऑफ जियो रेफरेंस बाय assigning latitude and longitude, and source of this is existing maps and remote sense images. Okay, तो source of this is, इसका सोर्स कौन सा है, इसमें कौन कौन से डेटा होता है, तो हम मैप स्टोर कर सकते हैं, रिमोट सेंस इमेजेस है वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, मैप कैसे बनता है, तो जो भी हमने सर्वे वर्क किया है उस पर से मैप बनता है। ओके, और रिमोट सेंस इमेजेस दैट मीन्स जो भी हमने सैटेलाइट से इमेजेस ली है, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंस इमेजेस। वो डेटा अंदर होता है, उस वो डेटा जो स्टोर होता है उसका वो एनालिसिस करेगा। इनपुट, वो डेटा पहले तो इनपुट करना पड़ेगा, उसमें एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर कॉम्बिनेशन करेगा, देन क्वेरी है तो वो सॉल्व करेगा, देन एनालिसिस करेगा, आउटपुट। ओके, ये तो कैसा है कि मैटलैब हम जब भी यूज़ करते हैं तो मैटलैब में क्या होता है कि हमें कोई भी डेटा डालना पड़ता है पहले, तो डेटा डाल, उसका जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से वो डेटा डालेंगे। वो डेटा डालने से फिर बाद में हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह के से ये है कि जो भी हम डेटा डालते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, उसके हिसाब से ये सब एनालिसिस वगैरह करके हमें सॉल्यूशन देता है कि इसका सॉल्यूशन ये है। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स पढ़ते थे, तो मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स में जो भी हम पढ़ते तो उसका सॉल्यूशन वो स्मॉल टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। ओके, बट मैट्रिक्स का साइज बड़ा है, फॉर एग्जांपल 32/64 का मैट्रिक्स है, तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। तो मैटलैब में ये सब होता है कि ये इतना बड़ा मैट्रिक्स है तो इसका रिजल्ट हमें कैसे लेना है, इसका आंसर क्या आएगा, तो उसका जो भी फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमें वो डेटा अंदर डालना पड़ता है, उसके फॉर्मेट में डालना पड़ता है, देन वो लास्ट में वो कैलकुलेशन करके हमें आंसर देगा। ओके, तो वो उसके हिसाब से हमें जस्ट डेटा डालना होता है, उसके हिसाब से वो जो भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें जो भी डेटा अंदर डाला है वो डेटा लेके वो अपने हिसाब से वो कैलकुलेशन करके हमें देगा। तो सॉफ्टवेयर का काम वो होता है। Okay, then information is the collection of variables and constants like name of road. Variables, name of road, that is called variable, and MG road, Ashram road, then Sardar Patel road are constants or data. Then next, to manage the constants and variables of the geographic features like roads, building data, उसके लिए क्या एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ओके, उसका यूज होता है। Such type of GIS is very much useful to engineers, administrators, political leaders, businessmen, policy makers, etc. GIS is useful to answer the questions, solve problems, assist in decision making. For example, engineers may use for planning of the road networks or irrigation canals. For businessmen to locate their business centers for maximum profit. For politicians to appoint local leaders. For policymakers to frame rules and acts. For example, इंजीनियर है तो वो ऐसा सोचेगा कि हम कैसे प्लान कर सकते हैं, तो उसमें भी GIS यूज़ हो सकता है। देन इरिगेशन कैनाल कैसे प्लान कर सकते हैं, तो उसको उसके लिए उसे सब डेटा चाहिए, तो डेटा हमें GIS में से मिल जाएगा, तो वो सब डेटा लेके वो प्लान कर सकता है कि ये डेटा है, यहाँ पे ये हिली एरिया है, यहाँ पे वैली एरिया है, वो सब डेटा लेके वो उससे प्लानिंग कर सकता है। फॉर बिजनेसमैन तो आपको क्या मिलेगा, बिजनेस सेंटर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। बिजनेसमैन के लिए क्या है मेन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट में कहाँ से किस सेंटर से ले सकता हूँ, बिजनेस सेंटर से, तो वो सब डेटा चाहिए, तो इसमें भी GIS यूज होता है। देन पॉलिटिशियंस टू अपॉइंट द लोकल लीडर्स। ओके, वो सब
उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, GIS. देन रियल वर्ल्ड ID dynamic. Real world is dynamic, it is continuously changing, hence it needs to update and modify the information. It is very convenient to modify in GIS compared to the conventional system of the maps. So the study of GIS means what are the components of GIS, how each component is created, integration of all the components to make the system, how to use the GIS system. The next one is spatial information system and non-spatial information system. There are plenty of information system in use since computers were introduced to commercial application. Few of them are listed below. Management information system, then computer based information system, railway reservation system, okay, then accounting system, okay, then banking system, earth resources information system, okay. All information systems can be classified into two categories: spatial information and non-spatial information system. Spatial information system and non-spatial information system. तो spatial information system में क्या आएगा, geographic information system and other than GIS spatial information system. The geographic information system में first one is traffic information system, second one is census management system, then next earth resources management system and land use land cover information system. Then other than GIS system में क्या आएगा, CAD, CAM, CT scan, etc. Then next one is non-spatial information system. What to understand by non-spatial information system? Deal and store, provide information which is not related to the location or geometry or position or not related to the XYZ coordinate. In management information system, the software deal with the employees in the organization. कौन कौन से कितने एम्प्लॉयज़ है, उनकी सैलरीज कितनी है, रो मटेरियल्स, दैन प्रोडक्ट्स, इन्वेंटरी अकाउंट्स, balance sheet, profits, loss account, etc. All this information is stored, updated regularly and delivered to the manager on demand at mouse click, has nothing to do with the location or place of the object. In spatial information system में क्या होता है, it is related to the location of the object, that means XYZ coordinate. Deal with the information of data or points whose location or position is important. All types of the geographic information systems belongs to this category of information system. But all spatial information systems are not necessary to be geographic information system. For example, CT scan system, similarly computer aided drafting, computer aided manufacturing are spatial information system but are not GIS. Different definitions of GIS. GIS is an integrated database management system for the spatially distributed features and the associated attributes. What do you understand by attributes? Okay, I explain. The next, GIS is organized system of the collection of the computer hardware, software, geographic data and professionals trained to capture, store, modify, manipulate, analyze and display all the forms of the information. Next, GIS is tool for storing, processing, retrieving, displaying data for the geospatial referenced earth surface. अर्थ के रिलेटेड जो भी डेटा है, ओके, दोनों इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, स्पाइटियल और नॉन स्पाइटियल दोनों इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें ये सॉफ्टवेयर में से मिल जाती है. GIS इज टूल फॉर स्टोरिंग, processing,
retrieving, displaying data for geospatially reference or surface. GIS is intelligent map which will give you much more information of roads, villages, etc., which is not available with traditional paper maps. कोई रोड का, विलेज का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, तो वो आपको जो मैप होता है उसमें अवेलेबल, उसमें से नहीं मिल सकता, तो आप GIS पे से फाइंड आउट कर सकते हो. Then GIS is decision support system involving integration of the spatially reference information system. Then special purpose GIS, then general GIS, 2D GIS, 3D GIS, then 4D classification of GIS में कौन कौन से आते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ GIS, स्पेशल पर्पस GIS, जनरल GIS, ये सब अलग अलग टाइप के GIS के नाम है, ओके, सॉफ्टवेयर के नाम है कि कौन कौन से टाइप के GIS होते हैं. तो 2D GIS, 3D GIS, 4D GIS, then web GIS, multimedia GIS, then virtual GIS, etc. The 4 Ms of the GIS. What do you understand by 4 Ms? The application of GIS on board base can be classified in 4 categories: measurement, mapping, monitoring, modeling, etc. The planner, engineer, scientist, businessman, leaders, then policy makers, etc. use GIS for their 4 Ms in their respective field of application. Okay. Measurements means information of map features, find their location, dimension. Topological information. What do you understand by topological information? तो फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी बात करते हैं कि भाई कोई लोकेशन हमें पता नहीं चलता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई चलो साबरमती पुलिस, ये फॉर एग्जांपल BRTS स्टैंड है और रामनगर कहाँ पे आया है, तो रामनगर कहाँ पे आया है, तो साबरमती पुलिस स्टेशन के नज़दीक है, ओके. तो हम देन दूसरा मोटेरा के नज़दीक है, ओके. तो ये सब जो आजू बाजू लोकेशन होता है उसका डिस्कशन करके हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ओके. दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स आसपास की जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी प्लेसेस है, उसका हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन. That is an intelligent mapping which is more than the real world. Our world is very dynamic. Parameters and information regarding geometry and characteristics are continuously changing. Monitoring is very much essential for efficiently managing resources. जो भी प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका मॉनिटरिंग करना भी ज़रूरी है, ओके. तो कोई भी फॉर एग्जांपल कंपनी को अच्छे से मैनेज करना है तो उसका मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करना पड़ता है, ओके. द एफिशिएंटली मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द बेटर सोसाइटी. Modeling is very important feature of GIS where all the static and dynamic information can be reproduced in the forms of tables, charts, maps, overlays or virtual reality models. Then next, virtual web-based GIS may help you drive your car from office to home in minimum time in peak hours by eliminating the traffic congestion areas. वर्चुअल वेब बेस्ड GIS क्या यूज़ करता है, क्या हेल्प करता है, तो आपको कार लेके जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मिनिमम टाइम में हमें कैसे जो भी एरिया है जहाँ पे भी मुझे जाना है तो वहाँ पे मिनिमम टाइम में कम ट्रैफिक में मैं कौन से रास्ते पे पहुँच सकता हूँ. दैट इज वो किसका यूज़ करके हम जान सकते हैं, वर्चुअल वेब बेस्ड GIS का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं.
Okay, the 4 Ms of GIS. The next key components of GIS. Computer system. The computer system is hardware and operating system. GIS software run on computer system. Computer hardware may be personal computer or supercomputers. An operating system should support all the operations of GIS software. Usually to run the GIS software, fast processors and huge data storage memory capacity is required. Components of GIS में क्या आएगा? Computer system, GIS software, procedure and professionals, and users of GIS, data and information. The next one is GIS software. So GIS software has many functions and tools. Store, digitize maps, then editing of maps and storing in separate layers, then database models for spatial data or attribute data. Attribute data क्या है और spatial data क्या है? तो spatial data that means इसका XYZ coordinate, that is called spatial data, और attribute data that means what, उसका जो description होता है, okay, तो that is called attribute data, वो हम आगे देखेंगे. Okay, then interaction with the user for the analysis, there is facility to ask the question by the user. GIS software answers after analyzing the data and information stored. जो भी हमने information अंदर store किया है उसका analysis करके, information का एनालिसिस करके, और जो भी डेटा हमने स्टोर किया है कंप्यूटर में उसका एनालिसिस करके वो हमें आंसर देता है. GIS software has ability to update and modify the spatial data and attribute data. Key components of GIS में next क्या आएगा? GIS software has ability to present data as output in form of tabular form, map form, statistic form and pictorial form as described by the user. The following are some GIS softwares used. ArcGIS, तो ISRO GIS, then ArcView, तो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? इंटरग्राफ MGP, देन ArcST, GM, ये सब सॉफ्टवेयर का नाम है. ओके, GIS सॉफ्टवेयर का नाम है. देन GIS सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. किस में GIS सॉफ्टवेयर यूज होता है? लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें यूज़ होता है. नेटवर्क सर्वर बेस्ड सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर लैब में भी नेटवर्क बेस्ड सिस्टम है, वहाँ पे भी GIS यूज़ हो सकता है. देन वेब बेस्ड GIS, दैट मीन्स गूगल मैप कैन बी कॉल्ड एज अ वेब GIS, एंड वी आर एंड यूजर्स ऑफ वेब GIS व्हेन वी ड्राइव इंफॉर्मेशन थ्रू इट. Then GIS software needs DBMS software, which can be any one of the following: MS Access, Oracle, SQL Server, etc. The next one is data and information. Data capturing and existing maps and satellite images. Data कौन सा है? तो data capturing from existing maps और satellite images से हमें data provide करना पड़ता है. Then collection and data entry of the spatial data for the georeferencing pixel of digitized images. Then collection and data entry of the attribute data for the various features like roads, rivers, canals, villages, towns, buildings, etc. Then procedure to operate the GIS, कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं? Developing software as per need of the user or organization requirement is different for different organizations. The software should have ability to capture data, store data, process and analyze, and the process of GIS software development has the following steps. Data capture, storing maps or images in the digital form. Next, input of attribute data, manipulation, transformation, visualization, then combination, query, analysis, output generation for the end users. The team of the professional to accompany the GIS comprises the GIS project manager, then database manager, system engineer, programmer, system operator, data entry operators. Completely developed GIS software knowledge of following disciplines is required. Then
कंप्यूटर साइंस, कौन कौन सी डिसिप्लिन हमें रिक्वायर चाहिए? जीआईएस सॉफ्टवेयर का नॉलेज, जीआईएस सॉफ्टवेयर कंप्लीटली डेवलप द जीआईएस सॉफ्टवेयर, हमें जीआईएस सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कौन कौन सा ब्रांच का हमें नॉलेज होना चाहिए? तो कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग, सर्वेइंग, फोटोग्रामेट्री, कार्टोग्राफी, then geography, then geodesy, GPS, mathematics and statistics, then optimization techniques or operation research for successful completion of process of GIS. Proper planning, implementation and coordination of the team of GIS project is very much essential. The next one is end users of GIS. The users of GIS is an individual or group of users, is an organization or group of organization. For example, a scientist or a student may need GIS for his research work. In such case, the amount of data required will be less, hence software may cost less. The GIS software may be for a single organization like agriculture, forest, marine, etc. The GIS software may be used by various government departments. That means आपका काम बड़ा है, आपको सिंपली रिसर्च वर्क करने के लिए यूज़ करना है तो उसका कॉस्ट कम होगा. पर फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी ये यूज़ होता है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा. इन ऑल केसेस रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी ऑफ द GIS सॉफ्टवेयर विल बी डिफरेंट. ओके, थैंक यू.